हे गाइस व्हाट्स अप, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। मैं आपका वसल और आप देख रहे हैं गोरखा रिएक्शन चैनल। सो उम्मीद करता हूँ मेरा बनाया वीडियो पसंद आ रहा, पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और आप चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि आने वाले दिन में जल्द से जल्द वीडियो देखने के लिए बेल बटन को भी प्रेस करना पड़ता है। सो बिना देरी किए प्रेस करिए। और पिछले कई सारे वीडियो में हम लोग ने बहुत सारे देशों के बारे में बात किया, बहुत सारे कामों के बारे में बात किया, पाकिस्तान के बारे में बात किया, इंडिया के भी बारे में बात किया और बांग्लादेश के बारे में बात किया। सो आज फिर एक और ज़बरदस्त वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। सो टाइटल को बताते हैं बिना किसी देर की। हाँ, उससे पहले अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आगे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। सो नीचे और कुछ कहना है तो नीचे ईमेल भी है और इंस्टाग्राम का लिंक भी है, सब कुछ नीचे मिल जाएगा आपको। सो आप वहाँ पे जाके बेझिझक के आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। और जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर बनाइए, उसके बाद करेंगे हम लोग Q&A, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के मन में कुछ चीज़ चल रहा होगा तो आप बेझिझक के पूछ सकते हो। सो जल्द से जल्द बनाइए और ये फैमिली थोड़ा बड़ा करने में मेरी मदद करिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब करके इस फैमिली के मेंबर हो चुके हैं उस लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे पॉजिटिव एनर्जी देते रहिए। सो आने वाले दिन में और अच्छे वीडियो बनाने के लिए आप लोग के साथ बहुत 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 ज़रूरी है मेरे को। सो चलिए आज के वीडियो बिना किसी देर के देखते हैं। सो टाइटल को बताते हैं। टाइटल है बांग्लादेश इकोनॉमी इज बूमिंग, कुड इट बिकम। सो अभी एशिया का अगला टाइगर बांग्लादेश होने वाला है। सो एशियन टाइगर विल बी गोज टू बांग्लादेश। सो देखते क्या है। सो इकोनॉमिक के ऊपर है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सो चलिए बिना किसी देर की 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। Bangladeshi economy is doing very well in recent times, growing about 8% per annum, and currently, it is one of the fastest growing economies in the world. Being one of the fastest doesn't mean everything about business is good here, as Bangladesh is continuously ranked almost bottom of the ease of doing business index made by the World Bank. The economy of Bangladesh is a developing market economy. It's the 39th largest in the world in nominal terms, and 29th largest by purchasing power parity. It is classified among the next 11 emerging market middle-income economies and a frontier market. In the first quarter of 2019, Bangladesh was the world's 7th fastest growing economy, with a rate of 7.3% real GDP annual growth. Dhaka and Chittagong are the principal financial centers of the country, being home to the Dhaka Stock Exchange and the Chittagong Stock Exchange. The financial sector of Bangladesh is the second largest in the subcontinent, although Bangladesh is one of the world's fastest growing economies. It is usually overshadowed by regional superpowers India and Pakistan. But the nation, which was once called a basketcase, is now being termed as the new Asian tiger, all thanks to its economic growth. As for the first time, Bangladesh's GDP of $317 billion in 2019 has surpassed that of Pakistan. With a GDP growth rate 3 times that of Pakistan, Bangladesh is sure to increase this lead over Pakistan in leaps and bounds going forward. Bangladesh was carved out of Pakistan in 1971. The comparison of the two economies has since been of immense importance to economists. Having a rough start, Bangladesh had ends to meet during the early years of independence from Pakistan, but over the years, they saw a massive boom in their economy. Some economists also term Bangladesh as the next Asian tiger, while Pakistan has a fairly unstable economic situation. Not only that, but according to some experts, Bangladesh economy to outshine Malaysia, Singapore, Hong Kong by 2024. Welcome to the Atlantis Report. The economy of Bangladesh is a developing market economy. It's the 39th largest in the world in nominal terms, and 29th largest by purchasing power parity. It is classified among the next 11 emerging market middle-income economies and a frontier market. Bangladesh is a country that was once called bottomless basket, now being termed as new Asian tigers. Bangladesh now becomes second fastest growing economy in 2020. Bangladesh's GDP is continuously rising and is rising very fast. Like the last 1 decade, its average GDP was 6.50%, which is a remarkable achievement.
Also, there is some mega project like Padma Bridge, metro rail, many expressways, seaports, airports, and so on. After these projects are complete, Bangladesh's GDP growth could go above 10%. Bangladesh's economy has grown roughly 6% per year since 1996 despite prolonged periods of political instability, poor infrastructure, endemic corruption, insufficient power supplies, and slow implementation of economic reforms. Although more than half of GDP is generated through the services sector, almost half of Bangladeshis are employed in the agriculture sector, with rice as the single most important product. Bangladesh is emerging from a low-income to lower-middle-income status, but it is too dependent on the heavily subsidized ready-made garment (RMG) sector, which totally dominates their export pattern and accounts for millions of jobs. Export was $42 billion in the past fiscal year, and in this fiscal year, there is a high chance that it will touch or even surpass $50 billion, which is higher than the target of $44 billion set by the government. The increase of the immigrants' remittance, garments export, shipbuilding, boost on the pharma, and electronics export are the main reasons. Also, the successfully established green factories in the special economic zones are also making a huge impact, good impressions to the foreign investors to invest in Bangladesh. The government has given land to India, China, Japan, Korea to set up their own special economic zones for attracting investors from their countries to establish industries. Thanks to the Prime Minister Sheikh Hasina for stopping religious radicalism and also taking steps to aid the private businesses. Tax-free import of raw materials and constant electricity. Before she took power, a lack of electricity harmed the manufacturing sector. Now can Bangladesh meet the huge infrastructure deficit which threatens to undermine the process of urbanization and transition to a more diversified economy? To reach its full potential and attain sustainable double-digit growth, Bangladesh needs to keep on improving its road, rail, and water infrastructures. The electricity and energy sector should continue to get the highest priority, and most importantly, the bureaucratic red tape should be removed through continuous reforms. According to the World Bank, one of the most densely populated countries in the world, with a population of 100 million, Bangladesh's extreme poverty rate has dropped to 12.5% in 20 years. World Bank President Jim Young Kim praised Bangladesh's major development in poverty alleviation, where the poverty rate has dropped from 8.2% in the year 2006 to 7.6% in 20 years. Bangladesh is making unprecedented progress in reducing its poverty rate, and according to the World Bank, Bangladesh has a great opportunity to eradicate extreme poverty by 20 years. One of the leading causes of poverty is local corruption and an inept government that has played little role in building infrastructure and good law. One of the major causes of rural poverty is the geographical and demographic characteristics of the country. A large part of the country is located in low-lying areas and is at risk of flooding. Many rural poor people live in places that are subjected to annual floods, and that causes massive damage to their crops, homes, and livelihoods. In order to rebuild their homes, they often have to resort to moneylenders, which leads them into deeper poverty. In addition, these natural disasters cause cholera, diarrhea, and other waterborne diseases. Dengue and malaria reduce their physiological and their productivity levels. Another reason for rural poverty is the rapidly rising population rate. This creates huge stress on the environment, causing problems like erosion and floods, which in turn reduces productivity in agriculture. The causes of urban poverty are limited employment opportunities, declining environment, poor housing, and sanitation. The urban poor work as laborers, which affects their health status. Therefore, the urban poor is in a difficult situation to survive poverty. About 5% of the country is located in the floodplains of the Ganges, Brahmaputra, Meghna, and other small rivers, resulting in the outbreak of floods. GNI per capita gross national income (GNI) is surprisingly well below the $120, while per capita GNI purchasing power equals $1. This is a scandalous figure compared to other developed economies. Although the poverty rate in Bangladesh has decreased, the work is being done at a slow rate of less than 2% per year. 5% of the population is still below the poverty line. Poverty is a factor because it affects many factors of growth, education, population growth rate, employment, and public policies.
Poverty is most concentrated in the rural areas of Bangladesh and therefore creates discrimination between rural and urban areas. However, urban poverty is also a problem. Hasina and Co. are one of the most corrupted regimes in the world. If Hasina is not in power, the growth of the country will increase significantly. In reality, the people of Bangladesh are not benefiting from this growth. Only Hasina and her party activists are benefiting. The condition of democracy in Bangladesh is in crisis. In the last few years, the condition is worsening. From educational institutes to any organization, government, and non-government, people who are close to the ruling party are at the top of the hierarchy. The University of Dhaka, also known as the birthplace of democratic resistance, is currently going through a severe crisis situation. The real crisis is exposed to the public when the vice president of the Dhaka University Central Student Union, Nurul Haq Noor, is assaulted in front of his office at the campus. Later, a case of attempt to murder was launched against him, the victim, in connection to this. Public university students are being tortured in residence halls in the name of ragging and guest room culture. Public universities of Bangladesh have a strong relationship with democratic resistance, and that legacy is being hampered because scopes of freedom of expression in these institutes are increasingly shrinking. In such a crisis of democracy, student politics and resistance are no longer showing us any hope of light. Moreover, people's vote to right, a basic concept of democracy in Bangladesh, is damaged. The ruling party Bangladesh Awami League is holding power with muscle. The proof is the last two national elections, January 5, 2014, and December 30, 2018. Now, a pillar of independence, democracy, is at risk. When Bangladesh is at an important phase, democracy is going through a severe crisis. At the end of 2019, police brutality on Left Democratic Alliance protests and Awami League activists' assault on a program in Sylhet protesting the attacks on Dhaka is giving hints to something new. 2020 will be a year full of incidents. The major duty of every citizen should be restoring democracy at any cost and dispelling autocratic tendencies from power quarters. Let this year be the year when autocracy is uprooted. 28% of the nation is forecast to be below sea level by 2100, including the whole of Dhaka, which rather hinders the developed bit. A 3 to 4 Celsius degree average temperature rise and an associated greater than 6 meters sea level rise is forecast by some for this century, so much of the country may be below the waves by 2070 and or susceptible to flooding well before. So things aren't looking good before you start to crunch the numbers. This was the Atlantis Report. Please like, share, and subscribe. Thank you. यहाँ पे वही वीडियो ख़त्म। बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन था और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो टॉपिक था वो बोला, और मैं एक बार एक जितना मेरे को नोट में आया मैं वो सब बताऊंगा। जो छूट रहा है नीचे आप जाके कमेंट में ज़रूर बताइए। पहले तो आप लोगों को पता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। 47 इंडिपेंडेंट हुआ पाकिस्तान और इंडिया, और 71 में बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हुआ। यहाँ पे क्या है, इंडिया पहले से एक इस्टेब्लिश होने शुरू हो गया था, उसके बाद पाकिस्तान भी हो रहा था, उसके बाद जाके बांग्लादेश सेपरेट हो गया। उसके बाद से बांग्लादेश ने स्ट्रगल शुरू किया था, जो बहुत छोटी समय पे 1996 से कंटिन्यूसली 6% इकोनॉमी GDP रेट रखा है इंक्रीजिंग। अभी तो 7.3 के रेट से जा रहा है। आने वाले 2021 में 8% से भी 8% होगा बोल रहे हैं, जो बहुत बड़ी चांस है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हालांकि ये अभी पाकिस्तान भी कर नहीं पा रहा है, इंडिया भी कर नहीं पा रहा है। अभी वर्ल्ड का 2017 समथिंग लाइक ये टाइम पे वर्ल्ड का फिफ्थ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था। अभी के 2020 के आंकड़े के हिसाब से 19 और 20 के बीच के आंकड़े के हिसाब से वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का किताब मिल चुका है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मुबारक बात आप सब लोगों को। हालांकि ये इंडिया भी कर नहीं सकता। फर्स्ट तो वहाँ पे जाके एक चीज़ किया, पॉपुलेशन कंट्रोल हो चुका है। यहाँ पे उसका थोड़ा सा पॉलिटिक्स का भी जो बात बोली, फर्स्ट तो वहाँ पे जाके पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ, और दूसरा चीज़ एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, सामान खरीद कम रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। ये दो चीज़ बहुत बड़ी मायने रखते हैं अपने देश को
स्टैब्लिश करना और आपको बोलते हैं ना रैंडमली स्टेप फॉरवर्ड लाने के लिए, ये दो चीज़ बहुत मायने रखती है। और ऐसे बहुत सारे अभी प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे कि चिटांग में बन रहा है, रंगामाटी में बन चुका है, और बहुत सारे पद्मा ब्रिज, रेलवे नेटवर्क, थीम पार्क, बहुत बहुत सारे बड़ी बड़ी चीज़ें बन रही है। और ये एशिया का टॉलेस्ट बिल्डिंग बन रहा है, आइकॉनिक टावर 147 फ्लोर का बन रहा है, कमाल का होने वाला है 2024 के अंदर। और परचेजिंग पावर पैरिटी में 29 नंबर पे पोजीशन पे आता है। और यहाँ पे तो एक बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और उसके बाद चिटोंग, ये तो बहुत ही अहम रोल करते हैं, क्योंकि जीडीपी को ग्रोथ करने में बाकी जगह ऐसा है कि जो सी लेवल पे, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, फ्लड वगैरह होती है। सो सी लेवल के बहुत ही नज़दीक है, तो इसलिए बांग्लादेश को बहुत सारे क्राइसिस आते हैं। बाकी देश में कुछ नहीं होता है, लेकिन बांग्लादेश में होता है, क्योंकि वो एकदम सी लेवल पे स्टेबलिश है, तो इसलिए बहुत सारे क्राइसिस आते हैं, फ्लड आता है, और फार्मिंग में भी बहुत हैम्पर पड़ता है। इसलिए वहाँ पे वो लोग का जो रिज्यूम बैलेंस मनी होता है वहाँ पे खर्च हो जाता है, क्योंकि सबको देखना पड़ता है गवर्नमेंट जो है, इसलिए बहुत सारी दिक्कतें आती है। सो इसका तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो जगह ही वैसी हिसाब से बना है, तो इसलिए वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करना है। प्रिकॉशन ले सकते हैं, ये अलग बात है। और दूसरा चीज़ बताया अभी आने वाले 2024 तक मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, ये बड़े बड़े देशों में ये लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। और ये सही चलता गया तो आने वाले दिन में ऑब्वियसली बांग्लादेश का एक जो आइकॉनिक बनने वाला है। ऐसे भी हालांकि अभी राइजिंग हो रहे, सो एशिया का टाइगर बन चुका है बांग्लादेश। सो आने वाले दिन में और भी अच्छा करते जाए, सो ये बहुत ही गर्व की बात है। सो बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि जीडीपी के आने वाले दिन में 2014 से 10% से भी ग्रोथ होने का चांसेस है। सो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। वहाँ पे कौन कौन सा टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, सो इसलिए डे बाय डे ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। सो ये लोग यहाँ पे जो सिस्टम एक सेटअप किया है गवर्नमेंट ने, उसका फ़ायदा सभी को मिल रहा है। और यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन रेडीमेड गारमेंट्स है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। सो यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स कितना बनता है और कितना लोगों को नौकरियाँ मिल रही है, और ये चीज़ हो गया। और दूसरा चीज़ अभी हालांकि ये यहाँ पे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और आपका बाकी जो चीज़ें ऑटोमोटिव, ये सारी चीज़ों को थोड़ा फॉरवर्ड लाना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, वो बांग्लादेश में ये कम है। सो इसको थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट, और बहुत सारे देश ने यहाँ पे सपोर्ट भी कर रहे हैं, और जो प्लांट है वहाँ पे लगाने का भी सोच रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जैसे कि चाइना की भी मदद मिल रहा है बांग्लादेश में, सो सपोर्ट कर रहे हैं सभी देश, सो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे और कुछ चीज़ मैंने कुछ छूट रहा है, सो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। सो 5% कंट्री का जो एरिया है वो हमेशा ही फ्लड के अंदर आता है। जैसे मानसून के टाइम पे बहुत बारिश होती है, सो वहाँ के जो रिवर्स है, सो वहाँ पे ज़्यादा पानी आ जाता है, तो इसलिए फ्लड के अंदर सब कुछ आ जाते हैं। कई लोगों का जान भी जा चुका है, और बहुत लोगों ने अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए, और बहुत सारे की जो खेती होती है वो सब नष्ट होके जाएगा। सो इसलिए बहुत सारी दिक्कतें आती है। सो यहाँ पे अभी बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं कि कैसे करके अच्छे से अच्छे होते जाए, ये बहुत ही अच्छी बात है। सो वीडियो इतना ही था, आप लोगों को कैसा लगा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।